आज हम डिस्कस करते हैं हाउ टू फंडामेंटली एवेल्युएट दी स्टॉक। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस, वन इज टेक्निकल एनालिसिस, अनदर वन इज फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में जनरली आप कंपनी एंड इंडस्ट्री को रीड करते हो। यू रीड हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग, यू रीड हाउ द कंपनीज एनुअल रिपोर्ट इज, you also read how the industry's growth prospect is, and based on that you take a call whether to invest on the company or not. Generally fundamental analysis आप उन companies के लिए करते हो wherein your time horizon of investment is long term. So let's say आप 5 6 7 10 years के लिए invest कर रहे हो, then in those cases you fundamentally evaluate the company. In contrast, technical analysis में आप price movement देखते हो of any of the stock, and you also see the financial market on the whole. Based on that you take the stock picking calls and you invest in the company for a shorter period of time. दोस्तों, इसके अलावा दूसरे भी मेथड्स है टू एनालाइज द स्टॉक। फॉर एग्जांपल सेंटिमेंटल एनालिसिस, wherein you study the sentiments of the public based on the various trends going on in the news and social media. There is also quantitative analysis, wherein आप आके stock pick करते हो based on various statistical and mathematical model which are available, which analyzes the financial and economic data. इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एंड ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में जाने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट देयर इज नो फिक्स्ड फॉर्मेट फॉर डूइंग द फंडामेंटल एनालिसिस, बट मेरे हिसाब से इट मेक्स योर लाइफ सिंपल व्हेन यू डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स एंड हैव फ्यू पर्सपेक्टिव फिक्स्ड व्हाइल डूइंग द रिसर्च. This is purely based on my experience and what I have generally heard from people while talking about investing. फर्स्ट एंड फोरमोस्ट पर्सपेक्टिव ये है कि अगर स्टॉक प्राइस कम है देन आई विल हैव गुड क्वांटिटी ऑफ स्टॉक. सो लेट्स से आपके पास 10,000 रुपए है एंड देयर आर टू कंपनीज टू इन्वेस्ट. कंपनी ए विच हैज 4 रुपीज पर शेयर, कंपनी बी विच इज ट्रेडिंग एट 1,000 रुपीज पर शेयर. सो व्हाट हैपेंस इज, कंपनी ए में अगर आप 10,000 रुपए निवेश करते हो यू विल गेट 2,500 शेयर्स, whereas in company B you will get only 10 shares. So इससे एक इंप्रेशन पड़ता है कि कंपनी ए में ज्यादा स्टॉक लेना इज अ बेटर ऑप्शन, बट दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच. मेरे हिसाब से आपको कंपनी को फंडामेंटली एवेल्युएट करके देखना चाहिए whether the company is actually good or not. So the first perspective which you need to fix is don't go after the price and quantity of the stock. Check the company whether it is actually doing well or not. Second perspective which you need to fix is you need to think that you are buying an asset and you are not speculating the market. So let's say for example आपके पास 1,00,000 रुपए है and you need to buy a new phone or a new electronic equipment, or let's say for example you need to buy a land itself. So आप क्या करते हो, आप आके evaluate करते हो, आप आके research करते हो on that phone or the land, about the area or whatever the electronic equipment you are buying, right? So that is the same thing which you need to do for investing as well. So likewise आपको ये एक चीज पर्सपेक्टिव फिक्स करना पड़ेगा that when you're buying a stock you are actually buying an asset for yourself, and accordingly you need to fundamentally evaluate the company. Final and most important perspective is you need to think that you are the owner of that company. In fact ये पर्सपेक्टिव नहीं है, ये रियलिटी है. So when you're buying a stock of any of the company you get a piece of ownership in that company. सो अगर आपके पास कोई फोन है देन यू आर दी ओनर ऑफ दैट फोन, अगर आपके पास कोई लैंड है देन यू आर दी ओनर ऑफ द लैंड. सो लाइकवाइज व्हेन यू आर बाइंग एनी स्टॉक देन यू आर दी ओनर ऑफ दैट स्टॉक. मेरे हिसाब से ये बेसिक पर्सपेक्टिव है which you need to fix before getting into the stock market investing, because the moment you start following these 3 points your approach of fundamentally evaluating the company improves. चलिए अब पर्सपेक्टिव तो फिक्स हो गया है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू evaluate the stock fundamentally. Basically there are two approaches in fundamentally evaluating the stock. One is top down approach, second one is bottom up approach. टॉप डाउन अप्रोच में मैं एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल पहले आप आके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पढ़ते हो and then what you do is you evaluate the industry in which you want to invest and then you evaluate the stock. Another approach is bottom up approach, wherein आप कंपनी को पहले सेलेक्ट करते हो, then you evaluate the industry and then what you do is you evaluate the macroeconomic indicators. मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ मैं टॉप डाउन अप्रोच यूज करता हूँ एंड इट इज इजियर फॉर मी बिकॉज मैं आके पहले इंडस्ट्री देख लेता हूँ, इंडस्ट्री के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देख लेता हूँ एंड देन आई गो इनटू द स्टॉक इन्वेस्टिंग बिकॉज इट फिल्टर्स आउट मेनी ऑफ द अदर इंफॉर्मेशन एज वेल एंड इट मेक्स माई जॉब वेरी मच सिंपलर एंड ईजियर. अब macroeconomic factors में there are 6 to 7 parameters which you need to check. For example, GDP, inflation, exchange rate, interest rates, and what are the unemployment conditions in the country, what is the price of crude oil, and how is the political scenario in the country. And एक disclaimer मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, don't get
too much deep into it. You just need to know what is happening around you, and you just need to have the information with you, but don't get too much deep into it. फॉर एग्जाम्पल एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है विच आई फाउंड, दैट इज आरबीआई रिपोर्ट के हिसाब से funding closure for capex has increased from INR 2 trillion in FY22 to INR 3.5 trillion in FY23, and capacity utilization for most sector warrants continued positivity in the corporate capex. So इससे we get an idea that the corporate capex is increasing. That means that the company's production capacity will also increase. अब next अपन को ये देखना है कि whether the consumption is also in the same pattern or not. But in the same article, we see that consumption is not so good for India. There can be multiple issues. One such issue is unemployment. दोस्तों 1990 में सेंसेक्स was trading somewhere around 1000 points and today it is somewhere around 79,000 points. So from a longer term perspective, what you need to see is whether the company is doing good or not. In last 20 years, Indian economy has faced lot of challenges, but that has not stopped the stock market to go up. As Peter Lynch famously says, if you spend 13 minutes a year on economics, you have wasted 10 minutes. नेक्स्ट लेग ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस इज सेक्टर एनालिसिस और इंडस्ट्री एनालिसिस. इसमें बेसिकली आप स्टडी करते हो हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स, व्हाट आर द गवर्नमेंट पॉलिसीज व्हिच इज फ्रेम्ड फॉर फंक्शनिंग ऑफ दैट इंडस्ट्री, व्हाट आर द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री, हाउ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मार्केट इज फॉर द इंडस्ट्री व्हिच यू हैव सेलेक्टेड. Basically, there are three types of industry analysis which you can do. One is Porter's five forces analysis. Second is pest analysis. Third is SWOT analysis. दोस्तों ये तीन एनालिसिस मैं डिटेल में कवर करूंगा किसी और वीडियो में, बट ब्रॉडली व्हाट यू नीड टू सी इज व्हाट आर द थ्रेट्स व्हिच द कंपनी इज फेसिंग, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज व्हिच द कंपनी हैज, व्हाट आर द एंट्री बैरियर्स, व्हाट आर द एग्जिट बैरियर्स, एंड व्हाट आर द रेगुलेटरी पॉलिसीज व्हिच द इंडस्ट्री हैज टू फॉलो, एंड मेनी अदर फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्री. दोस्तों आप ये इंडस्ट्री एनालिसिस का इंफॉर्मेशन एनालिस्ट रिपोर्ट से ले सकते हो. बहुत सारे न्यूज वेबसाइट्स है जिसमें फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक टाइम्स है, उसमें इंडस्ट्री पेज है, वहां से आप ले सकते हो. अगर कोई कंपनी आईपीओ में आ रही है देन उसका प्रोस्पेक्टस में आप पढ़ के ले सकते हो. एंड देयर आर मेनी अदर एसोसिएशंस व्हिच आर फॉर्म्ड बेसिकली इन द इंडस्ट्री, सो एसोसिएशन के भी रिपोर्ट्स आते हैं, सो वो इन्फॉर्मेशन भी आप वहां से कलेक्ट कर सकते हो. After reading all these information, you will basically have a hold on how the industry works, what the industry does, and what are the growth prospects of the industry. अब आपको फाइनली कंपनी एनालिसिस करना है जहां पे you need to finally go through the company's data for last 5-6 years and gauge its growth prospects. मैंने बेसिकली इसको 5 एरियाज में स्प्लिट किया है. फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट एंड ओनरशिप. आप मैनेजमेंट प्रोफाइल में बेसिकली स्टडी करते हो हु आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, व्हाट इज देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, व्हाट इज देयर पास्ट एक्सपीरियंस, whether there is any lawsuits against the management. Then you also see how the management has handled the crisis in the past. Second area is operational data, wherein you read all the sales and expenses figures of management. You read the profit and loss account, you read the balance sheet, you read the cash flow statements, and you also see what are the various assets which the management has added. You also see what are the various liabilities which the management has added. And second area which you need to concentrate is the financial ratios. Financial ratios basically आप दो वेरिएबल लेते हो of balance sheet, P&L और cash flow statement and compare it, and you come to some logical conclusion. For example, return on capital employed. Return on capital employed में आप क्या करते हो, आप आके मैनेजमेंट का प्रॉफिट लेते हो and you also see what the capital employed is. You compute the ratio and you get to know how much return is the company earning on the capital which is being employed. Second thing which you can say is for example interest coverage ratio, जहां पे आप आके EBITDA लेते हो and you also see what the interest cost is and you see whether the company is adequately safeguarded with the profitability or not to pay its interest cost. Third area what you read is financial data and investments. इसमें आप आके debt structure of the company study करते हो. You also see what is the interest cost of the company. You evaluate what is the repayment capacity of the company. You also read some of the reports which are being published by the credit rating agencies of for these companies. एंड एक चीज है कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डेट स्ट्रक्चर आके वेरी होता है. फॉर एग्जांपल अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लोग है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में डेट का ज्यादा यूज होता है. सो यू नीड टू सी हाउ देयर पीयर्स रीपेमेंट कैपेसिटी इज and how are they repaying the debt.
किसी भी कंपनी के ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है. सो यू नीड टू सी हाउ द कंपनी इज डूइंग द इन्वेस्टमेंट्स, व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट्स विच द कंपनी इज डूइंग इनटू, whether there are any foolish acquisitions which the company is doing. You should see the cash flow statements. Cash flow statements में आपको पढ़ना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, how the operating revenues which are being generated or operating cash flows which are being generated वो कैसे यूज हो रहा है for the investment purposes. Fourth area what you need to focus on is what are the various products which the company is selling. इसमें बेसिकली आपको कंपनी के वेबसाइट में जाना है. यू नीड टू स्टडी व्हाट आर द वेरियस प्रोडक्ट्स व्हिच द कंपनी इज सेलिंग, एंड इससे आपको एक आइडिया मिलेगा व्हाट आर द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट. आपको आके एमआरपी भी चेक करना है. हो सके तो आप आके उस प्रोडक्ट को भी ट्राई करके देखिए. यू नो व्हाट द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट इज. अगर बेसिक सी बात है, अगर क्वालिटी अच्छी है देन ज्यादा बिकेगी, अगर क्वालिटी खराब है तो कम बिकेगी. सो यू नीड टू सी हाउ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज एज वेल. अगर हो सके तो आप ट्राई कीजिए. देन नेक्स्ट थिंग you can also see is whether there are any reviews in the Amazon, or whether there are any reviews in Twitter or any of the websites which are available. So इससे आपको एक fair idea मिलेगा how the company's product is performing. Fifth area what I see is global presence of the company. So basically I see in which countries is the company operating. उनका रॉ मटेरियल का सोर्सिंग कहाँ से आता है, उनका सेल्स कहाँ से आता है. बिकॉज अगर उस कंट्री में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ देन उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होगा इस कंपनी में. सो यू ऑल्सो सी व्हाट आर दी इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ दोज कंट्रीज. और आखिर में आपको सब जर्नलाइज करके रखना पड़ेगा. यू नीड टू राइट अ स्टोरी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. What the company does, what is the growth prospects of the company, how the industry functions, what are the regulatory policies, what are the threats for the company, what are the opportunities for the company. ये सब आपको एक बना के रखना पड़ेगा, which will give an end-to-end information about what the company does and what are its growth prospects. Once your story is ready, the next step is to evaluate the intrinsic value of the company. ये अपने में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, सो मैं आज ये कवर नहीं करने वाला हूँ. I'll be covering in some other video with a live example. आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. एंड लेट्स मेक इंडिया फाइनेंशियली savvy. थैंक यू.